Jai Hind and welcome you back, student. In the previous video, you might have watched all the things responsible for the disintegration of the Soviet Union. It can be what are the factors responsible for the disintegration of the Soviet Union, how Stalin responsible for the disintegration of Soviet Union, how the liberal policy of Mikhail Gorbachev responsible for the disintegration of the Soviet Union. Right. In this particular video, I'm going to discuss the timeline of the disintegration of the Soviet Union right from 1985 till 1991. What are the events and the processes through which the transition or the phase of the transition of the disintegration of the Soviet Union passed in those 5 or 6 years? What are the situations or what are the political situations or the international situations being taken place and which become responsible for the disintegration of the Soviet Union? So have a look on the timeline of the disintegration of the Soviet Union, right? So dear student, timeline of the disintegration of the Soviet Union goes like this. So as I already told you that हम क्या डिस्कस करेंगे, मिखाइल गोर्बाचोव जब से जनरल सेक्रेटरी बने सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन का, तब से लेके द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन 1991 तक का, मीन्स 1995 से लेके 1991 तक का, व्हाट आर द चेन ऑफ द इवेंट्स यू कैन से विच टुक प्लेस एंड सोवियत द माइटी सोवियत यूनियन और USSR broken into 15 small independent country except Russia और 15 CIS. सो एक बाय एक जितना भी हम लोग का चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो चेन ऑफ इवेंट को हम अभी डिस्कस करेंगे. दो मोस्ट ऑफ द इवेंट्स आर ऑलरेडी बीइंग डिस्कस, बस मैं कोशिश करूँगा कि उसको टाइमलाइन के हिसाब से एज पर द इवेंट टाइम के हिसाब से एंड डेट के हिसाब से उसको मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में बोलते चलूँगा. 1985 March, 10th of March, Mikhail Gorbachev elected as the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union, already I told you. And he appoints Boris Yeltsin as the head of the Communist Party in Moscow, means in Russia. Initiated a series of reforms in Soviet Union. That also I discuss. What are the reforms being undertaken by Mikhail Gorbachev? He was a liberal communist. That's why his policy was a little bit different. He followed a path of Lenin, the Lenin path of new economic policy, NEP, which was being started in 1900 initial period of the 1990 or 20. 1988 independence movement began in Lithuania and later spread in Estonia and Latvia. These are all the states at that time under USSR. In 1989 October, Soviet Union declares that Warsaw Pact. You know about the Warsaw Pact? The Warsaw Pact was the counter to NATO, North Atlantic Treaty Organization, during the time of the Cold War. So the Soviet Union declares that the Warsaw Pact members, those who are the members of the Warsaw Pact, are free to decide their own future. And Berlin Wall falls in November. मीन्स वार्शो पैक्ट में जो भी मेंबर्स थे उनके साथ जो भी कम्युनिस्ट कंट्री के मेंबर्स थे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री का, उनको ये 1989 अक्टूबर में बोल देते हैं कि आप आज़ाद हैं. इफ़ यू वांटेड टू विथ अस इट्स ओके, अदरवाइज इफ़ यू वांटेड टू लीव द पैक्ट, लीव दिस ऑर्गेनाइजेशंस, यू कैन एंड टेक योर ओन कॉल. 1919 February, Gorbachev strips Soviet Communist Party of its 72 years long monopoly on power by calling on the Soviet Parliament Duma to permit multi-party system. I was talking about, you might remember, USSR was having only one political. Duma means that's the parliament of USSR, otherwise known as Duma, right? So 72 years एक ही political party रूल करता था. So how can you say this is a democratic system? तो कम्युनिज्म था. तो पहले बार 72 years के बाद पहले बार जो एक कम्युनिस्ट पार्टी का मोनोपोली चलता था, मिखाइल गोर्बाचोव ने परमिट कर दिया थ्रू द अमेंडमेंट्स कि मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ आ सकते हैं एंड इलेक्शन में मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टी कैन कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन अदर देन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑल्सो. 1990 March, Lithuania becomes the first of the 15 Soviet republics to declare its independence. लिथुनिया पहला कंट्री था जो कि USSR से निकल के पहला इंडिपेंडेंट कंट्री बना, पहला CIS था, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट
स्टेट्स बना 1990 मार्च में, और इसको रिकॉग्निशंस दे दिया गया। मार्च के बाद 1990 जून में क्या होता है, इन 1990-91 का ये 3-4 महीने के अंदर पूरे प्रोसेस हो गए थे। मीन्स बिकॉज 1989 आते आते ऑलमोस्ट इट वाज बीइंग डिसाइडेड दैट यस कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनेंगे एंड सोवियत यूनियन टूटने जा रहा है। सो बाय इन द बिगिनिंग ऑफ द 1990 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, 1991 दिसंबर तक में सब खत्म हो गया था। सो 1990 जून में रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन, एंड ऑलरेडी आई टोल्ड रशिया वाज बीइंग हेडेड बाय बोरिस येल्सिन, and that was the largest states and the most powerful state among all those CIS of USSR. 1991 June again, Boris Yeltsin is no longer in the Communist Party and becomes the president of Russia. He left Communist Party and he was being declared as the president of Russia, and it was being recognized, and Russia being recognized as the superpower, or you can say the permanent member of United Nations organizations also. Means Russia being डिक्लेयर एज द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर को इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भी रेस्पेक्ट मिलता था, या जहाँ जहाँ उनका अपना लेगेसी था, जहाँ जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो पावर्स या जो भी उसमें जिम्मेदारियाँ या जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी या जो पावर एंड अथॉरिटी हुआ करता था, सब कुछ ट्रांसफ़र हो गया रशिया के पास। 1991 अगस्त, द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स स्टेज ऑन एवर्टिव कूप अगेंस्ट गोर्बाचोव, बिकॉज उनका वो लिबरल पॉलिसी को लेके, बट that failed. 1991 सितंबर में 3 Baltic Republic, the Baltic states, they are Estonia, Latvia and Lithuania, became the UN members and later joined NATO in March 2004. ये जो 3 Baltic states थे, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुनिया, वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन करते हैं, एंड लेटर दे बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ United Nations organizations camp, that was NATO, North Atlantic Treaty Organizations, in March 2004. It means these 3 states, these 3 countries, they converted themselves into democracy with capitalism. 1991 December is crucial. 1991 December, Russia, Belarus and Ukraine decided to annul the 1922 treaty on the creation of USSR. जब USSR क्रिएट हो रहा था 1922 में, ये 15 CIS आके, 15 स्टेट्स आके जो ट्रीटी में साइन करके USSR बनाए थे, वो ट्रीटी को अब null and void किया जाएगा. And establish the Commonwealth of Independent States. Why it's known as Commonwealth? Because most of this particular country with the 15 CIS, they continue for a longer period of time. तो उनका जो भी प्रॉपर्टी, उनका जो भी चीज़ें, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अलग अलग जगह पे not evenly being distributed, so that जो इकोनॉमी को हो, इनिशियल फेज में इकोनॉमी को एक कॉमन इकोनॉमी को लेते हुए ये लोग चलने की कोशिश कर रहे थे. दैट्स व्हाई इट्स अदरवाइज नोन एज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS. आर्मेनिया, Azerbaijan, then Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan joined the CIS, and Georgia joined later in the year 1993. And Russia take over USSR seat in United Nations Organization, which already I told you that Russia got the UN permanent seat in Security Council in terms of the legacy from USSR. Finally, 1991, 25th of December, Mikhail Gorbachev resigns as the president of Soviet Union and the end of the Soviet Union. This is what the entire story or the timeline of the disintegration of the Soviet Union. I hope you understood this particular timeline, and in this period of around a year and a half, how the mighty country like USSR disintegrated into 15 CIS. Thank you.